अच्छा जी, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कौन सी स्किन केयर की चीज़ ली। ये क्लिनिक लाहौर की है। ये है एक जेल सनस्क्रीन, ये है बाय क्लिनिक लाहौर। सो ये है, आई हैव एक्चुअली नेवर सीन ए जेल सनस्क्रीन। तो मैं आपको थोड़ा सा निकाल के दिखाती हूँ। इस तरह का ये जेल एंड इट हैज़ अ बिट, थोड़ा सा इसमें एक येलो सा टिंट है। Has a very mild, I don't even think, does it even have any fragrance? Oh, just it's the last product, so that's fine. Very nice. I actually really like it. इसका texture मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो I think I'll definitely be using that. अच्छा, इसके बाद मैंने order करी है Glow Beauty से कुछ चीज़ें। मैंने देखा था Rabia Beauty, I'll link her below. उसने use करा हुआ था the highlighter. It's called Jewel. मैं swatch करके दिखा देती हूँ. This was so beautiful on her skin. Ooh, that taste. और ये मैंने अभी लगाया हुआ भी है. It's so pretty. Primer Master HD Pore Minimizing Primer. And in the bottle, it looks like the thick consistency, skinny. It's actually very nice. It's totally silicone, like, yeah, siloxane. मैंने अभी अपने मेकअप के लिए ये यूज़ करा है and I do really like this primer. उसके अलावा ग्लो ब्यूटी से मैंने ऑर्डर करा था ये क्यूट लिटिल रेनबो ब्यूटी ब्लेंडर मेकअप स्पंज। ये मैंने ऑर्डर करा था, बट दे वर सो नाइस टू सेंड मी फर्स्ट ऑफ ऑल लिटिल brush slash sponge cleaner. Are you kidding me? Glitter, 2 of them, so nice. Ooh, these are pressed glitters. ये green वाला है, those so beautiful. तो मैंने ऑर्डर करी थी ग्लैम गर्ल से कुछ चीज़ें, और सबसे पहले मैंने ऑर्डर करा था द नो मेकअप पैलेट, वो ये है एंड इस तरह का है. दिस इज द शेड, हाँ, पैलेट 01. तो मैं आपको स्वॉच करके दिखाती हूँ. इट्स क्रीम बेस्ड, तो ये हमारा बेस है, ये न्यूट्रलाइजर है, ये क्रीम हाइलाइटर है, और दैट्स प्रीटी, ये लिप और चीक tint है. That's actually very nice. Next glam girl की जो हमारी चीज़ है वो ये है, and this is the, I think this is the like highlighter one. तो ये moonlight है, फिर करेंगे blossom, that's sunshine. Oops, that was a really bad swatch. I'm so sorry. ये है glazed, and then in the middle there is haze. I'll just do that here. And then all of these neon pigments. I should swatch them, shouldn't I? I know आपको देखना तो होगा कि swatches कैसे हैं इसके. Okay, so I've swatched all of these. ये सब neon pigments हैं. Unfortunately, किसी के ऊपर कोई नाम या कोई description नहीं लिखी हुई है. So these are all just the colors that they have. I want to check something. Hopefully this works. But I'm gonna check. Oh, yes! Well, apart from the blue one and the purple one, the rest of them are UV. Cleansing balm. I don't know, where did I order this from? It says Glam and Charm, so it could be from Glam Girls. This is the cleansing balm. Yeah, it smells like coconut. Oh, it is coconut oil, liquid paraffin. Yeah. अच्छा, तो अब हम करेंगे काशीज हॉल. काशीज से मैंने ऑर्डर करा है उनका even tone high coverage foundation, and it literally is, ये मैंने अभी इस वक्त लगाया हुआ है, and the packaging is just like a MAC bottle. सिर्फ मुझे ये एक शिकायत है कि हमारे यहाँ जो जैसे फाउंडेशंस है या कोई चीज़, उनकी डिस्क्रिप्शंस में कलर्स नहीं लिखे हैं कि कौन सा अंडरटोन है, कौन सी स्किन टोन के लिए. like 1 2 3 4 5, I chose 3. I don't know. I really like it, but the undertone ठीक नहीं था, तो I'm just like उसके अलावा काशी से मैंने ऑर्डर करा है, जो मैंने अभी अपनी आईज पे यूज़ करा हुआ है, वो ये वाला है, and the packaging is really cute. And all these colors, this is actually very nice for a beginner. Yeah, अगर आप start out करें makeup, they have a lot of shades, a lot of fun colors, but a lot of neutrals and mattes as well. तो and it has a mirror. Second palette ये है Desert Rose palette. And this is all just like shimmers. तो इनमें से हम कुछ swatch करते हैं. Orange, that's very pigmented. Pakistan Zindabad. Blue. I love a good champagne color. Yeah, very nice. The next हमने करी है
छोटा सा लश हॉल। तो सबसे पहले मैंने ऑर्डर करा था ऑल डे ग्लो फाउंडेशन एंड दिस इज इन द शेड 1.5 और इसके अंदर this is what it looks like. Give it a shake. Feels pretty empty. Oh no! This is way too dark. I think I can make this work. They sent me a free little beauty sponge, which is so cute. And this color is, I'm living for it. It's a makeup primer. It's like a, yeah, like a white SPF primer. Feels nice. If you've been on my channel for more than one video, it's very clear I love blush. This one is the one जो मैंने अभी लगाया हुआ है, but it's a very nice product. And that, these two colors, I love these. Okay, next I have a box from j.beauty and packaging is so good. I just love this. So cute. First is the Madham palette. Just how cute is this packaging? Containing 13 shades, 7 are shimmer, 1 is glitter, 5 are matte. These are the colors. एक ही glitter है तो I should swatch. Let me tell you the names. Okay, that's cute. So इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है कि ये है dimensionals. तो ये है Sakina, Noora, Crease Blenders, Asia, Sana, Leila. Like, that's so cute though. What? I was so happy. Just have to get in there. This is the beautiful glitter that you just need. I think it has like a protective layer on top. That's that beautiful, gorgeous color. So Gul is this beautiful pinky shimmery shade and Rumi is this stunning blue. I love these. It's the giant mirror for me. Okay, next हमारे पास एक और palette है and this is the Shokh palette. के अंदर 13 shades है, 7 shimmers, 1 is glitter and 5 are mattes. These are so cute. And I love this glitter. Look at that. That's so beautiful. So I'm going to do this blue Shahzadi color. Wow, that's so pretty. I'm going to do Meaty, which is the hot pink color because pinks always stain. Now I'm going to put this here and I'm dekhte hain jab main isko wipe karungi stain karta hai ki nahi. Pretty. I'm just loving greens right now, so I'm just like into greens. Beautiful. All 3 of their lip sherbets. j.beauty hydrating tint gloss. Just had some juicy gola look with all the added hydration. So cute. थोड़ी सी medicinal सी smell आ रही है, but like it doesn't really bother me, but it could be annoying to some people, but it's fine. Lip sherbet shades just had a juicy gola gunda vibes. I'm actually wearing gulabi chiller right now and I like it. It's very hydrating and I love it. These tints are tinted. I'm using my cellar water and a double strength thingy and these are tints, so these are not going anywhere, which is good. Look at this packaging, is so cute. These are the 2 drama glows. These are highlighters. इसका नाम है चांद तारा और ये है झिलमिल. So I'm going to try to swatch them maybe on my wrist. ये है चांद और ये है cream highlighter है. तो oh my god, मैं कहाँ swatch करूँ, यहाँ करूँ? And powder, ये है तारा. Oh damn, look at that. And this is झिलमिल. I feel like I'm gonna love this color. So this is that and Mil, Jhil, and this is Mil. Mil is super glittery. तो ये आज की हमारी वीडियो हो गई कंप्लीट. आज ज़रा डिफरेंट था. आज हमने हॉल करा है ऑल पाकिस्तानी ब्रांड्स एंड आई एम ऑनेस्टली सो हैप्पी एंड सो एक्साइटेड टू ट्राई a lot of these out. आज मेरा फुल मेकअप भी पाकिस्तानी ब्रांड्स का है, तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी या मैं इधर कहीं लिंक कर दूंगी वो वीडियो. उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई है. अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.